can certainly help in deploying that and achieving that vision for the region in India and beyond. Second is that more transparent information system needs to exist, we believe, for Indian companies to seek talent and technology in Russia. A national capability registry could be quite valuable, much like there exists one in Israel today. There is also power in bilaterally building bridges and accelerator to infuse collaboration between Russian and Indian startups and venture capitals. Examples exist for India, Israel, India, Silicon Valley, even India and China have started to create bilateral tech conferences. And we believe we need to accelerate that effort. I think if we can create a Russia-India accelerator in the near time, it could be very valuable for the startup communities. Dear sirs, Uttisht Bharata is indeed happening. India is rising. And I want to thank Honorable PM Modi and his government for the Chanakya Niti that they have employed to help us achieve that. Healthify is only one amongst many others like Practo, Ola, Swiggy, and Flipkart that have had the Indian will and strong Russian partnership and investments to achieve amazing heights. And we strongly believe such partnerships can continue, and startups like ours will help in the future to help India rise and help our collaborations reach to new heights. So thank you for that. Thank you, Mr. Vasisht. Now I invite Mr. Kirill Dmitriev, Director General, Russia Director Investment Fund, to share his thoughts. Уважаемый Владимир Владимирович, премьер-министр Моди, коллеги, мы присутствуем благодаря вашей поддержке на самом крупном инвестиционном форуме между Россией и Индией. Здесь присутствует более 500 делегатов из крупнейших российских и индийских компаний. И я хотел поделиться некоторыми мыслями, которые обсуждались раньше, и некоторыми примерами, которые позволят нам кратно увеличить совместные инвестиции. На сессии по стартапам мы обсуждали, что и в России, и в Индии есть очень много успешных программистов, математиков, и мы считаем, что совместные проекты в области искусственного интеллекта могут совершить тот технологический прорыв, который нам крайне важен, и повысить эффективность во многих отраслях на 30–40%. В связи с этим мы решили выделить вместе с нашими индийскими партнерами несколько сот миллионов долларов для совместных инвестиций именно в сфере искусственного интеллекта. На сессии по инфраструктуре мы обсуждали о том, что потребности инвестиций в инфраструктуру в Индии составляют 1,5 триллиона долларов. И наши компании готовы активно принять участие в этих проектах. У нас есть совместный фонд с суверенным фондом Индии по инфраструктуре. И, безусловно, компания РЖД играет ключевую роль здесь по прорыве в железнодорожном транспорте и с точки зрения совместного производства вагонов и использования совместных коридоров, о которых говорилось раньше. Очень важно, что в промышленности и в агросекторе у нас большое сотрудничество в области удобрений и в ряде других секторов. И бизнес просит правительство Индии рассмотреть возможность снижения или обнуления пошлин на ввоз удобрений российских в Индию. Это позволит индийским фермерам получать продукт по более дешевой цене и позволит кратно увеличить наше сотрудничество в этой сфере. На энергетической панели мы обсуждали не только те многомиллиардные инвестиции компании Роснефть и Сибур, которые пришли в Индию, создали очень много рабочих мест здесь, но необходимость по СПГ-инфраструктуре и по другим энергетическим проектам взаимодействия. Также крайне важно, что наш малый и средний бизнес активно взаимодействует. Корпорация малого и среднего бизнеса представила свой бизнес-навигатор, который очень был позитивно воспринят малым и средним бизнесом Индии. Мы приветствуем приход индийских компаний в Россию, в частности, Tata Power планирует инвестировать на Дальний Восток совместно с нами. Поэтому в заключение я хотел поблагодарить вас за те усилия по совместным проектам, по тем инвестициям, которые осуществляются, потому что мы действительно считаем, что их можно увеличить в 3–5 раз в горизонте 3 лет. Спасибо большое. Thank you, Mr. Dmitriev. Now I invite Mr. C.P. Gurnani, CEO and Managing Director of Tech Mahindra, to report on the day's proceedings. Honorable Prime Minister of India, Honorable President of Russia, and the Honorable Ministers and all the guests from Russia. In
one of the important panel discussions on ICT, and particularly on the digital economy, we had a chance to discuss, along with the panelists from Russia, the way forward and where we are. What we looked at is our ambition, India's ambition to be a $1 trillion economy in ICT and digital economy. We also shared that the Prime Minister has laid out an ambitious plan for our economy to double to $5 trillion. And within that, there is a desire that our current exports of ICT is approximately $165 billion. We think that there is a much further scope, and we need to press the levers around that. But more importantly, there is a desire to make Digital India an inclusive Digital India. And we believe that as we build up this ecosystem, there will be areas where we would be able to take help from Russia. For example, in today's aircraft, almost 50 to 60% is electronics and software. In today's defense and missile systems, about 50% is really the embedded systems and software. We also believe that as the 5G rollout happens in telecom, the intelligence will go to the base stations. And that effectively means is that we need to secure. And cybersecurity will play a huge and important role. Russia has invested through its education system, through its development systems, a fair amount of leadership in cybersecurity systems. We think India, both for consumption in India market as well as for us to remain competitive in the global market, this collaboration can yield a lot of results. Similarly, we strongly believe that India, while imports a lot of defense systems, but today we can contribute a little more by Make in India campaign that the Prime Minister has given to us. We believe that as we start collaborating, we can create a lot of software and embedded systems right here in India. So as of date, I can only say is that if we were to do a scorecard on ICT and digital economy between the two countries, I think it will come close to 0%. And this is for a country which now exports ICT and services to about 130 countries. I think we need to change that equation. Business in general has a unanimity that we would like a task force to be formed to look at how we can collaborate better, how we can remain competitive, and how we can globalize together, and how we can benefit each other's digital economy. And my request to the honorable ministers and the Prime Minister and the President is, please bless this ICT task force, because there is a lot of work to be done. We have an appetite, we have an urgency. Thank you. Thank you, Mr. Gurnani. I thank dignitaries for presenting the day's report. It is now my privilege to invite His Excellency, President of the Russian Federation, to address the gathering. Спасибо. Thank you. Уважаемый господин Моди, уважаемые друзья, я очень рад приветствовать ведущих предпринимателей России и Индии. В этой аудитории присутствует более 100 руководителей крупнейших компаний наших стран. Это подчеркивает серьезный настрой бизнеса к наращиванию российско-индийского взаимодействия в области торговли и инвестиций. Мы с большим интересом выслушали доклады о состоявшихся в ходе форума дискуссиях. Обсуждались действительно практические вопросы делового взаимодействия.
Вот и последний выступающий говорил прямо о конкретных вещах. Заключен целый ряд важных коммерческих договоренностей, согласованы новые проекты и инициативы. Мы с нашим другом, с господином премьер-министром уделяем приоритетное внимание развитию торгово-инвестиционных связей между Россией и Индией. Эта тема традиционно занимает центральное место на наших переговорах. Так было, конечно, и вчера вечером, и сегодня. Согласен с господином премьер-министром, что прочное, разветвленное экономическое сотрудничество, экономические контакты являются надежной основой для углубления отношений особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами. С удовлетворением отмечаем и взаимный рост товарооборота. Он устойчиво растет. В 2017 году он увеличился на 21%, 9,3 миллиарда долларов. В январе-июле текущего года прибавил еще 20%, уже 6 миллиардов долларов. Таким темпом мы выйдем на 10 и больше миллиардов. Темпы роста неплохие. Вместе с тем, технологический, ресурсный и кадровый потенциал наших стран позволяет стремиться к более значительным объемам торговли и капиталовложений. У нас есть и ориентир довести к 2025 году двусторонний товарооборот до 30 миллиардов долларов, а взаимные инвестиции до 15 миллиардов долларов в каждой из стран. Но мне кажется, что мы должны стремиться к большему. Этого нельзя будет достичь без самой активной совместной работы российских и индийских деловых кругов. Без вашей работы, уважаемые дамы и господа. Без того, чтобы не совершенствовать промышленную кооперацию, не создавать новые технологические и инвестиционные альянсы в передовых и наукоемких, прежде всего, отраслях. Все эти вопросы детально рассматривались сегодня на отдельных сессиях и круглых столах в рамках форума, где были намечены новые перспективы по диверсификации и увеличению взаимной торговли, осуществлению эффективных инвестиций в таких ключевых секторах, как энергетика, цифровая экономика, инфраструктура. Обо всем этом и здесь сейчас только что говорили, и вы обсуждали это на своих сессиях. Исхожу из того, что все полезные начинания бизнеса будут поддерживаться на государственной линии, по государственной линии, российскими и индийскими министерствами и ведомствами. Компании двух стран будут активно привлекаться к национальным программам индустриального развития, к крупным инфраструктурным проектам. Условились, что правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению остающихся таможенных и административных барьеров на пути взаимного движения товаров, услуг и капиталов. Насколько я знаю, вот на уровне министерств как раз эта тема обсуждалась сегодня. По 5 направлениям идет работа, надеюсь, что она будет завершена положительно. Этому будет способствовать подготовка соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. Традиционно ключевой сферой экономического взаимодействия России и Индии является энергетика. По этой теме на форуме также прошел специальный круглый стол. Наша страна была и будет надежным поставщиком энергоносителей для индийской экономики. Стратегический характер приобретают совместные проекты в области поставок сжиженного природного газа. Взаимовыгодную кооперацию в этой сфере развивают «Газпром» и индийская «ГАИЛ». В июне в Индию поставлена первая партия сжиженного природного газа. Индийская госкомпания ONGC участвует в проекте по добыче и сжижению газа на месторождении Сахалин-1. Подключилась к геологическим изысканиям на российском арктическом шельфе. Многие годы работает на Ванкурском нефтегазовом конденсатном месторождении. Успешно реализуются долгосрочные контракты по линии Роснефти. В прошлом году российская компания купила индийскую нефтеперерабатывающую корпорацию SR Oil. Это крупнейшая инвестиция, иностранная инвестиция в экономику Индии – 12,6 миллиарда долларов. Я уже говорил, мы с премьер-министром сегодня обсуждали это. Мы будем приветствовать, если индийские партнеры подключатся к работе и в Арктике. Это очень перспективная, долгосрочная работа, очень серьезная, рассчитанная на десятилетия вперед, с хорошими инвестициями, с хорошей отдачей. С учетом того, что происходит изменение климата, где-то хорошо, где-то, может быть, не очень, но
возможности использования Северного морского пути увеличиваются. Мы строим атомный флот, 8 атомных кораблей строим, и они будут последовательно вступать в строй. Работа уже идет. Это обеспечит надежные поставки сжиженного природного газа на индийские и вообще на мировые рынки. Так что это может быть очень интересно, будет наверняка очень интересной работой совместно. Россия помогает Индии развивать ядерную энергетику. Росатом строит АЭС Кудам-Кулам, как известно. Рассматривается возможность возведения еще одной атомной электростанции по российским технологиям. Перспективным направлением российско-индийского взаимодействия считаем развитие транспортной инфраструктуры. Российские компании прорабатывают проект модернизации более 500 километров индийских железных дорог. Заинтересованы в активизации системной работы по созданию коридора север-юг. Этот маршрут позволит значительно сократить время доставки грузов из Индии в Европу. Есть и другие очень интересные перспективные высокотехнологичные сферы, где мы можем совместно работать. Это и авиация, и космос, и ряд других направлений. Медицина, фармацевтика. В этой представительной аудитории хочу особо подчеркнуть, мы заинтересованы в расширении присутствия индийского бизнеса в России. Стремимся формировать максимально комфортные условия для привлечения инвестиций и технологий. Инвесторам предоставляются серьезные преференции, упрощаются административные нормы и регулирования, развивается современная инфраструктура. Россия обладает мощным торгово-промышленным потенциалом. Наша экономика показала, что способна успешно справляться с самыми сложными и самыми острыми вызовами. Мы ставим перед собой новые масштабные задачи по достижению прорывного развития и долгосрочного роста, модернизации промышленности, инфраструктуры, социальной сферы. Позитивную динамику демонстрируют и российские макроэкономические показатели, что является безусловным нашим достижением за последние годы. Обеспечена устойчивость государственных финансов, растут золотовалютные резервы страны. Достигнут текущий профицит федерального бюджета. Добавлю, что улучшается ситуация и на рынке труда, что создает благоприятные условия для работы. Уровень безработицы 4,7%. Рост реальных зарплат 8,7%. Это рекордный показатель с 2012 года. Рассчитываем, что индийские деловые круги в полной мере воспользуются возможностями, которые открываются на российском рынке. В свою очередь, мы поддерживаем стремление российских компаний активнее работать в Индии. Мы знаем и, конечно, будем всячески способствовать реализации планов господина премьер-министра в рамках его программы «Делай в Индии». Мы говорили сегодня об этом применительно к самым разным отраслям, включая военно-техническое сотрудничество. Уверен, что такое тесное взаимодействие бизнес-сообществ, дальнейшее углубление двухсторонних торговых и инвестиционных связей, безусловно, отвечает коренным интересам двух стран. Я хочу пожелать вам успехов и благодарю вас за внимание. Спасибо. Thank you, Your Excellency, for your inspiring address. Now it's my privilege to invite our Honorable Prime Minister to address the gathering. रूस के महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बिजनेस वर्ल्ड के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नमस्कार। आप लोगों के बीच आने का अवसर मिलना वाकई एक सुखद अनुभव है। पिछले साल जून में भी भारत और रूस में कार्यरत कंपनियों के सीईओ से हमारी मुलाकात हुई थी और मैं मानता हूं कि निरंतर संवाद की इस प्रक्रिया से आपसी रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं और निखर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में भारत और रूस दो महान देशों के बीच रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। हम खुद भी एक दूसरे से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
साथियों, हमारे राजनयिक संबंधों को पिछले साल 70 वर्ष पूरे हुए हैं। 70 वर्षों की इस लंबी यात्रा ने दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता, आत्मीयता और आपसी समझ को निरंतर मजबूत किया है। इस रिश्ते का स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बदलाव दोनों देशों की समान आकांक्षाओं और नजरिए का उदाहरण है। दुनिया में बदलाव आना सामान्य बात है। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है, पर भारत और रूस की दोस्ती कभी नहीं बदली। हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ सद्भाव और मैत्री की गंगा और वोल्गा हमेशा थी, हमेशा रहेगी। हमारे संबंधों को लगभग हर क्षेत्र में विस्तार मिल रहा है। उसकी आधारशिला है दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और समझदारी। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। इस रिश्ते को दोनों ही देशों का उद्यम जगत और ज्यादा मजबूती दे रहा है। दोनों देशों के व्यापारी वर्ग के प्रयासों से अर्थव्यवस्था में और नागरिकों की सुख सुविधा में बढ़ोतरी हो रही है। सच पूछिए तो हम अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रूस को सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी मानते हैं। पिछले 2 वर्षों में दोनों देशों के बीच के व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। अगर मैं सिर्फ साल 2017-18 की ही बात करूं तो भारत का रूस के साथ व्यापार 20% बढ़ा है। इसी से उत्साहित होकर सरकार लगातार प्रयासरत है कि रूस का भारत में निवेश और भी बढ़े। साथियों, आप सब इस बात से भली भांति परिचित है कि रूस की कंपनियों को भारत में निवेश करने में सुविधा हो। इसके लिए हमने रशिया प्लस नाम से एक व्यवस्था खड़ी की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है रूस के निवेशकों को एवं कंपनियों को आवश्यक जो भी सहयोग चाहिए वो प्रदान करना। और मुझे बताया गया है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं। 23 प्रोजेक्ट भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे सहयोग से निश्चित ही दोनों देशों के बीच बिजनेस एक्टिविटीज और बढ़ेगी। साथियों, आज विश्व में भारत एक चमकते हुए सितारे की तरह उभर रहा है। इसको और गति देने के लिए हमारी सरकार रिफॉर्म की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्हें मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में किए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और उसी का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था आकार अब लगभग $2.6 ट्रिलियन का हो गया है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर है और पहले 5 में आने की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे घरेलू नीति हो या फिर विदेश नीति में भारत की छवि, चाहे आर्थिक प्रगति हो या टेक्नोलॉजी का विस्तार, चाहे सुधार कार्यक्रम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाना हो या बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, सभी क्षेत्रों में भारत एक स्थिर व्यवस्था का मॉडल बन रहा है। हमारा रेगुलेटरी ढांचा भी अब ज्यादा सक्षम,
ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा स्थिर है। पिछले साल लागू किया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक बहुत बड़ा कदम है। इससे भारत में टैक्स व्यवस्था और पारदर्शी बनी है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इन प्रयासों के निरंतर परिणाम मिल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 3 साल में भारत 42 स्थान पर ऊपर गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में की रैंकिंग में भारत 21 स्थान पर ऊपर उठा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2 साल में हम 31 स्थान पर ऊपर गए हैं। भारत अंकटाड द्वारा लिस्ट किए गए 10 FDI डेस्टिनेशन में से एक है। साथियों, ऐसे परिवर्तन तब आते हैं जब बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर फैसले लिए जाते हैं, दूरदर्शी सोच के साथ नीतियां बनाई जाती हैं और निर्णय लागू किए जाते हैं। पिछले वर्षों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हमने काफी रिफॉर्म किए हैं। आज हम FDI की दृष्टि से सबसे खुली अर्थव्यवस्था है। भारत में 90% से ज्यादा मंजूरियां अब ऑटोमेटिक रूट पर दी जा रही है। इसी का परिणाम है कि हमारी FDI पिछले 3 साल में लगभग 2 गुना हुई है। इसके अलावा मेक इन इंडिया जैसे विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से भारत को मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। भारत कम लागत पर मैन्युफैक्चरिंग करने का अपना धरातल लगातार बढ़ा रहा है। उसी तरह से हमारी IT इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर काम कर रही है। भारत टेक्नोलॉजी में नए आविष्कार के क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आदि के जरिए इंडस्ट्री 4.0 की तरफ आगे बढ़ चुका है। साथियों, भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी चारों तरफ काम हो रहा है। स्पीड, स्केल और स्किल पर जोर देते हुए हम 21वीं सदी की आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता ही है कि विश्व की आबादी का 6ठा हिस्सा भारत में रहता है। ऐसे में हमारी सरकार देश के 125 करोड़ लोगों की आशा, आकांक्षा, उसके अनुरूप उनकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। हम एक न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। सरकार यह भी मानती है कि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना है और निश्चित तौर पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम आपको भारत में बन रही विशाल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस अपार अवसर के कुछ उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूंगा। हमारा सागरमाला कार्यक्रम, जिसके जरिए हम समुद्री तटों को और देश के प्रादेशिक क्षेत्रों को जोड़ना चाहते हैं, आप सभी के लिए भी यह एक बहुत अच्छा अवसर है। हम अपने 50 शहरों में मेट्रो रेल की शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी आपके लिए एक उत्तम मौका है। हमारा रेल एवं रोड का कार्यक्रम बहुत ही विशाल है। इसका हमें लगातार विस्तार करना है। ये भी मैं समझता हूं इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है। देश में मौजूद पोर्ट, एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के साथ ही नए पोर्ट और एयरपोर्ट की स्थापना की हमारी एजेंडे में है। साथियों, भारत और रूस के पारंपरिक एवं परस्पर लाभकारी संबंधों को देखते हुए मैं आज इस अवसर पर कुछ और नए सुझाव भी देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में
भारत के अलग अलग राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हमारे राज्यों में एक दूसरे के बीच हेल्दी कंपटीशन का भाव आया है। मैं चाहूंगा कि रूस के प्रोविंस और हमारे राज्यों के बीच संवाद और बढ़े। दूसरा, ये कि रूस हमारे लिए पारंपरिक ऊर्जा का एक स्रोत बन ही सकता है, साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि वो हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अभियान में भी शामिल हो। तीसरा, हम दोनों देश न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मित्र समान हैं। अब हम टेक्नोलॉजी खरीदने बेचने वाले ही नहीं, लेकिन साथ मिलकर उन सामानों को भारत में उत्पादन के लिए विशेष काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हम रक्षा के क्षेत्र में अपनी पुरानी साझेदारी एवं समझदारी को आगे बढ़ाते हुए मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन कर सकते हैं। हम इस बात का भी स्वागत करेंगे कि रूस भारत में एक डेडिकेटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क खोले। उसी प्रकार रूस में हमारी आईटी एवं फार्मा कंपनियों के लिए काम करने का अच्छा अवसर है। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां रूस की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर काम किया जा सकता है। रूस का कोई क्षेत्रों में अनुभव हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, और खास करके स्पेस के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ये बहुत महत्व रखता है। इस दृष्टि से आप लोगों ने जो 4 फोकस सेक्टर चिन्हित किए हैं, मैं उसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। इनमें एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर का समावेश होता है। साथियों, आपकी आपसी चर्चा वाले जो बिंदु यहां उठाए गए हैं, उनको भी हमने ध्यानपूर्वक सुना है। मैं आशा रखता हूं कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध इन 4 क्षेत्रों के स्तंभ पर और भी मजबूती से खड़े होंगे। मुझे विश्वास है कि आज की आप लोगों की बातचीत से आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में और तेजी आएगी। मैं भारत के सिस्टमेटिक रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट रिसोर्स एलोकेशन, रिलायबिलिटी ऑफ पॉलिसी और रिसर्जेंस ऑफ ह्यूज मिडिल क्लास का लाभ उठाने के लिए आह्वान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं राष्ट्रपति पुतिन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं रशिया से आए हुए डेलीगेशन का भी आदरपूर्वक सत्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister. Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiration and guidance. Our businesses will all take inspiration from yours and President's guidance. With this, ladies and gentlemen, we come to a close of this event. Thank you so much.